and we have been doing excellently well with our students. Our students, you know, have done wonders in achieving good ranks in all the MDS examinations, be it NEET, be it INICT. Okay, so let us start this session. And so the first question: 0-degree teeth are indicated in all except. So 0-degree teeth, they, first option, patient with long history of wearing worn out denture, flat ridges, decreased interresistance, patient having milling chewing pattern. तो यहाँ पे सबसे पहले I want to discuss regarding the indications. If I can, just a minute. Okay, so if we see the indications of 0-degree teeth are, first सबसे पहली इंडिकेशन होती है flat ridges. Second is patient with poor neuromuscular control. या patient with neuromuscular disorders, like एग्जाम्पल लिख लीजिए, like Parkinson's, like tardive dyskinesia, myasthenia gravis, cerebral palsy. Okay, so these are the patients which cannot hold their mandible in a specific position or in an optimum position to give a jaw relation. So in such cases we give a flat teeth. Then knife edge ridges. If you see flat ridges, knife edge ridges, why do you require a knife edge ridges? क्योंकि knife edge ridges में there will be so much of pain and soreness. So we do not want a lot of forces to go on to the ridge. So knife edge ridge. Parafunction, yes. Patient with bruxism. Even complete denture patients also suffer from bruxism. This I have already told. Large interspaces. देखो जितना ज़्यादा बेस, अगर ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, जितना ज़्यादा, अगर मान लो रिजॉर्प्शन से क्या होगा, हमारा रिजॉर्प्शन से हमारा इंटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट. रिजॉर्प्शन से हमारा इंटर रेजिस्टेंस बढ़ता है. अब सोचिए हमारा ये मैक्सिला है, मैंडिबल है, इतनी दूर दांत अरेंज होंगे, और सोचो आपने कस्ट टीथ दे दिया, ठीक है, कस्ट टीथ दे दिया, तो क्या होगा, मीडियोलेटरल लॉकिंग से हमारे डेंचर वो हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे. तो ऐसे केसेस में वी हैव टू गिव फ्लैट टीथ. तो फ्लैट टीथ से स्टेबिलिटी बढ़ती है लार्ज इंटर स्पेसिस में. देन पेशेंट विद अ मिलिंग टाइप ऑफ चूइंग पैटर्न विद ब्रॉड एक्सकर्जन्स. कई पेशेंट होते हैं वर्टिकल चूअर्स, कई होते हैं पेशेंट विद हैविंग अ लाइक जुगाली की तरह करते हैं. तो ऐसे पेशेंट जिसमें मिलिंग चूइंग पैटर्न है, इसमें एक्सकर्जन्स इवन इन हॉरिजॉन्टल या लैटरल डायमेंशन में भी है, तो ऐसे केसेस में हम वी डू नॉट गिव कस्प टीथ, वी गिव 0-degree टीथ. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन वी स्पेशली इन पेशेंट विच आर वेयरिंग और वेरी आपने देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट जो ये 15 से 20 साल में डेंचर रिप्लेस भी नहीं कराते, तो उनके दांत घिस जाते हैं, डेंचर वेस चल रहे होते हैं, पेशेंट खा रहा होता है आराम से. नाउ सोचो, मान लो 10 से 15 साल पहले पेशेंट के बहुत अच्छे दांत थे डेंचर पे, अब सोचिए अब रह गई ये, सिर्फ इतना रह गया, तो क्या होगा, उसमें मैंडिबल कोई लॉक तो है नहीं, मैंडिबल इज फ्रीली कैन मूव एंटीरियरली in horizontal direction, anteriorly, posteriorly, there is no restriction for the mandible to move.
तो ऐसे पेशेंट जो कि बहुत सालों से वोर्न आउट डेंचर्स पहन रहे हैं, जिनके दांत बिल्कुल घिस गए हैं, आप अगर उनको बिल्कुल कस्टडी दे दोगे तो वो पेशेंट कभी भी डेंचर नहीं पहने. ही वुड फील एज इफ यू हैव पुट अ लॉक इन द मैंडिबल, इट विल बी लॉक्ड. तो ऐसे पेशेंट जिसमें पेशेंट बहुत टाइम से वोर्न आउट डेंचर पहन रहा है, यू हैव टू गिव सम फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल. तो पेशेंट विद ओल्ड वोर्न आउट डेंचर विद अनरेस्ट्रिक्टेड मैंडिबुलर मूवमेंट, this is one of the very important indication for this state. Okay, which of the following, next question, which of the following articulators simulate, now this is important. बेटा हमेशा सिमुलेट होता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता. तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, आर्टिकुलेटर सिमुलेट करते हैं कि डुप्लीकेट? हमेशा सिमुलेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कभी भी नहीं कर सकते मैंडिबुलर मूवमेंट को. तो विच टाइप ऑफ आर्टिकुलेटर्स simulate most of the mandibular movements and except Fesbo record? Type 1, type 2, type 3 and type 4. So the answer here is the most advanced type 4, and mostly it contains fully adjustable articulators. तो fully adjustable articulators में जैसे type 4A और type 4B आते हैं. तो type 4A में हमारे जो condylar element और condylar guide है उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते. और टाइप बी, दीज आर स्टिल द मोस्ट एडवांस्ड आर्टिकुलेटर्स लाइक टीएमजे सिमुलेटर, स्टीरियोग्राफ, टीएमजे इंस्ट्रूमेंट. इसमें आप इवन पेशेंट के हिसाब से कॉन्डाइल और कॉन्डाइलर गाइड को आप कस्टमाइज कर सकते हो पेशेंट के हिसाब से. तो क्वेश्चन में क्या था हमारा, तो विच टाइप ऑफ आर्टिकुलेटर सिमुलेट मोस्ट ऑफ द मैंडिबुलर मूवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेसबो. याद रखना 1 और 2 में फेसबो इट कैन नॉट टेक द फेसबो. हमारा फेसबो स्टार्ट होता है सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर से, जो कि हमारा टाइप 3 से स्टार्ट होता है. ठीक है, टाइप 3 में भी 3 होते हैं, ए बी एंड सी. ठीक, तो हमारे सेमेस्टिकल आर्टिकुलेटर लाइक हनाउ, कोई भी हनाउ एस सीरीज, यूनिवर्सिटी सीरीज, राइट, हनाउ वाइड व्यू, विपमिक्स आर्टिकुलेटर, डिनार आर्टिकुलेटर, राइट. तो ये सारे आर्टिकुलेटर हमारे टाइप 3 में आते हैं. दीज आर सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर, चाहे वो आर्कॉन हो चाहे नॉन आर्कॉन. ठीक है, फिर एक और चीज़ आती है आर्कॉन कौन से, नॉन आर्कॉन. तो देखो हनाउ जितने भी पुराने आर्टिकुलेटर्स थे, हनाउ एच सीरीज़ के, वो सारे नॉन आर्कॉन थे. उसके अलावा जो हनाउ वाइड व्यू, हनाउ यूनिवर्सिटी सीरीज़, ये सारे हमारे आर्कॉन है. इसमें विपमिक्स भी आ गया, इसमें दिनार भी आ गया, एटसेट्रा. ये सारे हमारे आर्कॉन आर्टिकुलेटर्स. आर्कॉन मतलब हमारा टीएमजे लाइक. एक्सक्यूज मी. अब थोड़ा सा ये बताया तो आपको आर्कॉन नॉन आर्कॉन में क्या फ़र्क होता है. आर्कॉन होता है TMJ like configuration and this is opposite of the TMJ. TMJ का मतलब अगर हमारे आर्टिकुलेटर में कॉन्डाइलर स्लॉट जो है वो अपर मेंबर में है और कॉन्डाइलर एलिमेंट हमारे लोअर मेंबर में है, तो वो होगा आर्कॉन. इट इज़ लाइक TMJ. जैसे हमारा ऊपर हमारा मैक्सिला का हमारा ग्लिनोइड फोसा मैक्सिला अपर मेंबर, और कॉन्डाइलर जो हमारा कॉन्डाइल होता है तो वो लोअर मेंबर माना जाता है. एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन हो तो अगर स्लॉट कॉन्डाइलर गाइड अपर मेंबर में हो और कॉन्डाइलर एलिमेंट लोअर मेंबर में हो, कॉन्डाइलर एलिमेंट लोअर मेंबर में हो, तो उसको हम आर्कॉन बोला जाता है. अगर इसके अपोजिट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन आर्कॉन में क्या होता है, नॉन आर्कॉन में जो कॉन्डाइलर गाइड होती है वो होती है लोअर मेंबर में और कॉन्डाइलर एलिमेंट होता है अपर मेंबर में, राइट दिस. ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो गया. तो मैंने कहा चलो इफ अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको ये भी बता दूं. आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
True about labiodental sounds in complete dentures. Okay. So it is produced when the lower incisors contact the wet line of the upper lip. It is produced. Second, they are used to assess the anterior posterior and the superior inferior positioning of maxillary incisors. Then if anterior set teeth are set too high up, F will look like V and both B and C. Now labiodental sounds mainly, okay, labiodental sounds देयर, labiodental का मतलब है कि जब हमारे अपर इंसाइजर्स लोअर लिप को टच करते हैं तो लेबियो मीन्स लिप्स एंड डेंटल मीन्स टीथ, तो लेबियो डेंटल इसमें होते हैं एफ एंड वी. तो एफ और वी कब बोलते हैं? देखो हमारा इफ़ यू सी दिस इज ए लोअर लिप, ओके, ये बक्कल एस्पेक्ट है, ये लिंगुअल एस्पेक्ट है, ये हमारे नीचे के दांत हैं. तो ऊपर के दांत एफ जब बोलेंगे तो दे विल टच दी वर्मिलियन बॉर्डर और दी वेट लाइन ऑफ द लोअर लिप. ठीक है, तो बोलो एफ एंड दिस इज एफ एंड वी, और हमारा लिंगुअली टच होगा, मतलब इट विल टच even lingual to the wet line or the vermilion border of the lower lip. Okay, so it will be around the posterior 1/3 of the lower lip. So is it produced by the contact of lower incisors? No, by the contact of the upper incisor with the wet line. तो ये गलत है. Are they used to assess the anterior posterior and superior inferior? Yes, it is true. If anterior test set are too high, F will look like V. It is wrong. I will tell you why. Both will be wrong. So best answer is में they are used to assess the superior inferior and the you know anterior posterior positioning of the maxillary incisors. अब लिख लो, अगर हमारे देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारे अपर टीथ हैं वो हमारा जब वेट लाइन पे टच होते हैं तो आवाज़ आती है एफ, और जब वो और लिंगुअली टू दी पोस्टीरियर 1/3 पर टच होते हैं तो आवाज़ आती है वी. ठीक है, ओके. अब अगर हमारे अपर दांत शॉर्ट हो गए, ठीक है, अगर हमारे अपर टीथ और शॉर्ट हो गए या फिर हमने और ऊपर लगा दिए तो क्या होगा? तो पेशेंट जब पेशेंट वी बोलना चाहेगा, तो हमारा लिप एफ की जगह लग जाएगा. तो इसका मतलब जब हमारे दांत छोटे हैं या ऊपर चले गए तो जब पेशेंट वी बोलना चाहेगा तो एफ निकलेगा. एंड इफ उल्टा है कि हमारे दांत ही बहुत लंबे ले लिए, ठीक है ना, तो होगा क्या कि वो पहले ही लिंगुअली टच कर जाएगा. ठीक है, ऐसे शक्ति कपूर की तरह, वो जो उसमें हीरो नंबर 1 में था ना, तो एफ बोलेगा तो वी निकलेगा, वी, तो वो पहले ही लिंगुअल टच हो जाएगा. तो अगर वो एफ बोलेगा तो वी लगेगा. तो सीधी सी बात है, अगर शॉर्ट या ऊपर लगा दिए दांत तो वी विल लुक लाइक एफ, और अगर लंबे या बहुत नीचे लगा दिए तो एफ विल लुक लाइक वी. ओके. Next, a question from FPD. True about shoulder finish line indication except, मतलब this is asking for contraindication. Okay, so if we talk about contraindication, तो facial surface of ceramic veneers, porcelain jacket crowns, labial aspect of PFM, IPS empress. दिस इज परफेक्ट. पोर्सलिन जैकेट ऑल सेरामिक हो गया. पीएफएम के लेबल एस्पेक्ट शोल्डर देते हो. आईपीएस एम्प्रेस अगेन ऑल सेरामिक और इंजेक्टेबल पोर्सलिन्स.
तो व्हाट इज फेशियल सरफेस ऑफ सिरामिक विनियर्स? तो सिरामिक विनियर्स में नॉर्मली यू गिव लॉन्ग शैम्फर या लाइट शैम्फर. तो आंसर इज ए. दिस इज द रॉन्ग आंसर, राइट? ठीक है, तो अगर मैं और फिनिश लाइन की बात करूं तो हमारी, आई विल जस्ट टेल यू दी ऑल ऑफ द फिनिश लाइंस. फेदर एज होती है, चिजल एज, शैम्फर, शोल्डर विद बेवल. ओके, तो हमारी जो फेदर एज होती है तो ये बेसिकली कहाँ होती है हमारी? फेदर एज हमारी नॉर्मली इनएक्सेसिबल एरियाज में हो या दांत टिल्टेड हो तो हमें ज़्यादा बल्क रिडक्शन नहीं करनी है, इनएक्सेसिबल एरियाज पे है. ठीक है, तो वहाँ हम फेदर एज देते हैं. या फिर हमें फिनिश लाइन बनानी है हमें सीमेंटम में, राइट? तो ऐसे केसेस में हम फेदर एज देते हैं. एडवांटेज बहुत कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, बट इट डजंट प्रोवाइड सफिशिएंट बल्क. लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट मार्जिन. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फेदर एज it is not a distinct margin. So there are high chances, very very important, high chances of over contouring. There are high chances of over contouring in feather edge या chisel edge finish line. ठीक है, तो बेसिकली हम, ठीक है, तो टिल्टेड टीथ जहाँ इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया देयर हाई चांस ऑफ ओवर कॉन्टूरिंग. एडवांटेज डेफिनेटली कंजर्वेटिव है. दूसरा आता है शैम्फर. तो फेदर एज डेफिनेटली जब हम देंगे तो ऑल मेटल के लिए देंगे. इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, बहुत बड़ी एडवांटेज है. कंजर्वेटिव तो ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स दी, राइट डाउन, इट प्रोवाइड्स दी बेस्ट मार्जिनल सील. बेस्ट मार्जिनल सील. वाई? बिकॉज क्योंकि मेटल का इतना एक्यूट एज दांत के कॉन्टेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड द बेस्ट मार्जिनल सील. दूसरी है हमारी शैम्फर. द शैम्फर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट मार्जिन. इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट बल्क फॉर ऑल मेटल. दिस इज अ शैम्फर इज द बेस्ट फिनिश लाइन फॉर योर all metal crowns and lingual aspect of PFM. Lingual aspect of PFM, right? But we should be careful when we are over preparing. देखो शैम्फर हम जब करते हैं प्रिपेयर, मान लीजिए ये दांत है तो हमारा बर आधा दांत के अंदर होना चाहिए और आधा दांत के बाहर होना चाहिए, तब वो 0.5 mm. फेदर एज की जो हमारी थिकनेस होती है वो होती है 0.3 mm की विड्थ होती है. अगर हमारी शैम्फर है तो शैम्फर की विड्थ होगी 0.5 mm. शोल्डर की होती है 0.8 to 1 mm. ठीक है, तो शैम्फर, तो जब हम शैम्फर बनाते हैं और अगर हमने हमारा बल टिल्ट कर दिया या हमने ओवर प्रिपेयर कर दिया शैम्फर, ठीक है, ये शैम्फर अगर हमने ओवर प्रिपेयर कर दिया तो वहाँ पे एक ऐसी लिप बन जाता है. देयर इज अ लिप फॉर्मेशन. लिप मीन्स लिपिंग हो जाती है, अनसपोर्टेड इनेमल रह जाता है जो कि अनडिजायरेबल है. ठीक. शैम्फर के बाद आती है हैवी शैम्फर. हैवी शैम्फर का मतलब है, हाँ एक चीज़ और शैम्फर में बताऊंगा कि जब हम शैम्फर देते हैं तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो केवो सरफेस एंगल जो बनता है वो हमारा ऑब्ट्यूज बनता है. लिख लीजिए. तो ये देखो, अगर मैं कहूँ तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है. केवो सरफेस एंगल इन शैम्फर इज ऑब्ट्यूज. ठीक. अगर हम डीप शैम्फर या हैवी शैम्फर बनाते हैं तो हम इंटरनल लाइन एंगल को और राउंड कर देते हैं. तो बेसिकली ये अगर हमारा ये था तो ये हमारा ऑलमोस्ट अब ये 90 डिग्री एंगल होता है हैवी शैम्फर में. तो इसीलिए हैवी शैम्फर को हम वी कैन गिव हैवी शैम्फर इन केस ऑफ ऑल सेरामिक क्राउन. जो कैडकैम क्राउन्स होते हैं ऑल सेरामिक, उसमें हम हैवी शैम्फर दे सकते हैं. ठीक. उसके बाद आती है शोल्डर. शोल्डर मार्जिन डेफिनेटली उसमें आपका केवो सरफेस एंगल 90 डिग्री है. ठीक. इट इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव मार्जिन, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, शैम्फर में एक और चीज़ है, इट हैज़ अ लीस्ट स्ट्रेसेस. इस मार्जिन में सबसे कम स्ट्रेसेस होती है. ठीक है. डिस्टॉर्शन सबसे कम होती है. बहुत अच्छी मार्जिनल सील प्रोवाइड करता है मेटल से. ठीक है. लेकिन शोल्डर हम कहाँ देते हैं? फेशियल एस्पेक्ट ऑफ PFM.
ठीक है, कंप्लीट ऑल सेरामिक क्राउन्स। बेस्ट इज इट प्रोवाइड्स बल्क फॉर ऑल सेरामिक। तो हमें सर्कमफ्रेंशियल 90 डिग्री शोल्डर प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी ऑल सेरामिक सिस्टम। ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि भैया कंजर्वेटिव नहीं है। और इसकी एक और सबसे बड़ी एडवांटेज है इन्फीरियर मार्जिनल अडेप्टेबिलिटी, लिख लीजिए, इन्फीरियर मार्जिनल अडेप्टेबिलिटी। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, शोल्डर में एक बेवल प्रोवाइड कर देते हैं। ये अगर शोल्डर है तो हम क्या करते हैं, ये बेवल प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो बेवल से एक तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है ना, अडेप्टेबिलिटी की। तो अडेप्टेबिलिटी की हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा बल्क। ठीक है, बल्क तो आ रहा है। बेवल का एडवांटेज, एक तो हमने अनसपोर्टेड एनामल हटा दिया हमने। ठीक है, हमारी सीटिंग बेटर हो गई, हमारी मार्जिनल सील बेटर हो गई। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें बेवल जब देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बेवल दिया, तो उस बेवल पे हमेशा मेटल आता है, फिर उसके बाद चाहे मेटल सेरामिक स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब सोचो, ये हम पोस्टीरियर में तो बहुत अच्छी बात है, पोस्टीरियर में पीएफएम दे रहे हो, सुपराजिंजाइवल मार्जिन दे रहे हो, बेवल बहुत अच्छा है। अगर वो हमारा मेटल दिखे भी, मेटल बैंड दिखे भी, तो हाउ डज इट मैटर। तो अगर कोई आपसे पूछे शोल्डर विद बेवल, तो इट इज़ दी बेस्ट फिनिश लाइन। ये लिख लो, ये 10 बार 100 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज़ द बेस्ट फिनिश लाइन ऑफ चॉइस फॉर पोस्टीरियर मेटल सेरामिक क्राउन्स विद सुपराजिंजाइवल मार्जिन। एक्सीलेंट फिनिश लाइन ऑफ चॉइस। एंटीरियर में ठीक है, एंटीरियर में भी आप पीएफएम कर सकते हो अगर आप कर रहे हो, बट देन यू हैव टू टेक द मार्जिन सब जिंजाइवली। ठीक, तो सब जिंजाइवल मार्जिन लेके जाना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि वेन एवर पॉसिबल, लिख लो, वेन एवर पॉसिबल ऑलवेज गो फॉर supragingival margins. But if there is या तो सर्वाइकल केरीज हो, या फिर हमारा सर्वाइकल एम्ब्रेजन हो, या फिर एस्थेटिक जोन हो, या फिर वी नीड इंक्रीज रिटेंशन। तो इंक्रीज रिटेंशन के लिए हम सबजिंजाइवल जाते हैं, एक्स्ट्रा बिग गेन, एक्स्ट्रा एमएम। तो ऐसे केसेस में हम फिर सब जिंजाइवल फिनिश लाइन वो करते हैं। सब जिंजाइवल फिनिश लाइन डेफिनेटली इट हैज़ प्रॉब्लम्स, केरीज हो सकती है, पेशेंट बोलता है बहुत चीज़ साफ ना रख पाए, माइक्रो लीकेज हो सकती है, लेकिन और हमें एक और स्टेप करना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं जिंजाइवल रिट्रैक्शन का। राइट, क्लियर है? आई होप थिंग्स आर क्लियर। क्लियर है? ओके, ओके, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। एनीथिंग इन चैट बॉक्स?
Yes. Okay. Yes, type 4 TMJ articulated are type 4 only. RS, can you take class in English? Okay. Sorry, I read your message late. I will take the class in English only. But I hope you are understanding. I'm seeing HS, Dr. RS. I hope at least give me a thumbs up if you're liking the class, and any other topic you want me to take, I will take it. Okay, I'll be speaking more in English right now. Okay. Now next question. Steps in porcelain laminate veneers cementation. Now siliconization, etching, resin, cement application, curing. Etching, siliconization, resin application, curing. Okay. Now first understand the concept of cementing a ceramic veneer. Understand, it's a very important concept. So we know that whenever we are going for a veneer, normally, okay, so we have to prepare two things. One is the veneer preparation, and then is the we have to prepare the teeth also. तो दो चीज़ों को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. We have to modify two things. तो first is the veneer. So when on the, if this is the veneer, on the tissue surface, first we apply HF. HF normally comes in into two concentration, 5% and 10% around. So if we are going for 5%, then you have to etch for 20 seconds. For 10%, 10 seconds. You apply on the tissue surface, you are etching it. What does etching do? It will expose the silica chains. Dr. RS, I will make sure from now onwards. I know that there may be language barriers, but I am really sorry. I was not knowing. I thought I'll be more taking 99.9% class in English only. Okay, we will do implant class in the next class, don't worry. Okay, I'll surely plan the class, but I hope the MCQs you are liking it. I hope you are understanding. Okay, so first understand this. So with the hydrofluoric acid, we etch first the tissue surface of the ceramic. Okay, you have etched this. After you have etched, then what you do is you wash it and dry it. As soon as you wash it and dry it, then you will get a very chalky appearance. That means etching is complete, right? After etching, then apply phosphoric acid. This is not given anywhere. Apply phosphoric acid. As we apply on the tooth, you have to apply on the veneer after this, so that the undissolved जो glass matrix is there, it removes the crystals of the glass ceramic, undissolved crystals. Okay, now my surface of the glass is absolutely clean. Second step, I will apply, then I will wash it. Definitely I'll wash it and dry it. Okay, phosphoric acid, wash it and dry it. Now I will apply something known as silane coupling agent. Silane coupling agent forms the bond between the ceramic and the resin. Okay, right? Okay, now silane coupling agent, I apply it, I leave it there for 10 seconds and I will air dry it. Don't wash it, I air dry it. Okay, so first step is etching, then is siliconization, and then is the resin application. Okay, then you apply the veneer to the tooth. So before you apply the veneer to the tooth, you have already etched the tooth with the phosphoric acid. जैसे आप, you have to follow all the procedures as you do for your composite. You have to etch the teeth with phosphoric acid, 37% phosphoric acid for 30 seconds.
वॉश इट एंड dry it. ठीक है. Then apply bonding agent but do not cure it. Remember this. Apply bonding agent, whatever I am saying, please understand this. Bonding agent but do not cure it, because if you cure it, that the veneer might not sit, on the tooth, because if it sets, if the bonding agent pulls on the tooth and it forms a layer, there might be seating issues of the veneer. So do not cure it. Take the cement, apply on the tissue surface and place the veneer in this place. Whatever flash comes out of the outside the margin, just clear it. Now remember this, the cement that you are using, it should be a completely light cure resin cement, because the light cure resin cement doesn't have tertiary amines in this. Because tertiary amines, they oxidize after some time in the oral environment and show discoloration, which can be seen through the veneers. Now see, if the patient goes for veneers, solely aesthetic procedure, and after some time veneer gets discolored, you see discoloration beneath the veneers, it will be shown badly. So why do you want to take the chance of using a chemical cure or a dual cure cement, resin cement? Always use a light cure resin cement, because it does not have any tertiary amine, so it won't discolor. Got my point or not? Got my point? Then you cure it, and you can cure it fully. Remove the flash, remove it, and then you can cure it fully from the palatal aspect 20 seconds, facial aspect 20-40 seconds, complete it, cure it, right, and finish and polish it. Next question, average root surface area of maxillary second molar. Beta, it is 431 mm square, 431. Now kindly have a look. If we have to follow the so the choices 438, 433, 431, 435, answer is 431. So in maxilla, if we see the pericemental area of so if we see maxilla 204, CI, LI, maxillary LI 179, canine 273, first premolar maxillary 234, second premolar 220, 433 first molar, 431 second molar. Mandibular 154 is the mandibular central incisor, then 168, 268, 426, ठीक है, 207 and 431. तो अब आपसे पूछ रखा है second molar maxillary, it is 431. So pericemental area you have to use in Anti's law to see that. So Anti's law, what does Anti's law state? That for example, this is teeth A, this is missing, and this is teeth B. So we see that this is C, the teeth that you have to replace is C. So what does Anti's law states? You can do an FPD when the pericemental combined pericemental area of the supporting teeth, यहाँ पे है, this is A plus B, should be at least equal to or greater than the teeth pericemental area of the teeth you are replacing. Then only you can do at least an FPD. Got it? Got it? Is it clear? So you have to apply this rule. So it was given by Irwin H. Ente. Irwin H. Ente, he proposed Ente's law, but it was advocated and gave into a clinical application by Johnstone et al. Clinically application was given by Johnstone. Irwin H. Ente, he proposed Ente's law. Irwin H. Ente. Next question. Non-rigid connectors are indicated in all except first, where the single path of insertion cannot be achieved in parallel abutments. Then short span FPDs with one
abutment tilted, pyre abutment, all of the above. So definitely when we are giving a non-rigid connector, so where single path of insertion can be achieved in parallel abutments. No, this is then why do we require a non-rigid connector? If we have straight teeth with single path of insertion, okay, with parallel abutments with a common path of withdrawal, common vow of withdrawal, then why do you require non-rigid connector? You don't require it. If there is a tilt, if there is a pyre abutment, if there is long span FPDs, if the the tilt is something like that, we do not have a common path of withdrawal, okay, then we give a pyre abutment, then we give a non-rigid connector. When the periodontally compromised teeth are present, then we give non-rigid connectors. I hope it is clear. Yes? Okay. Good question. Next question, statement which is in favor of Henry's law. It provides selection of abutments in RPD and FPD. FPD में तो सुना है, RPD में नहीं सुना, तो it is a wrong statement. Okay. Second, extra secondary abutment may be added in case of excessive force situations. Yes, absolutely. सही है, clear है. Third, also tell you about the height of connector in FPD. No, it will never tell you. So the best answer is if extra forces, if there's a situations, then you may require more addition of abutments for the force distribution. So answer B is right. Functional cusp reduction in FPD. It provides for bulk addition in case of force bearing cusp. Yes, it's a right statement. Retention form, no. Aesthetic reasons, no. B and C, no. So best answer is this. So what we do is, in maxilla we are, for example, we are doing PFM preparation. This is buccal cusp, this is palatal cusp. So in maxilla, palatal cusp are the functional cusp. So for PFM we will do more reduction, and in non-functional we will do less reduction, around 1 to 1.5 mm in non-functional, and on functional cusp we will give you 1.5 to 2 mm. We need extra bulk. Why? Because these are centric cusp or the centric holding cusp, which have to bear more forces. So there the amount of material or the structural durability would be the best. That is why, and the opposite is true for the mandible, where the buccal cusp are the functional cusp and the lingual cusp are the non-functional. So we require more reduction on the functional cusp, and we give a bevel, functional cusp bevel, because of we want to improve the structural durability. Okay, clear? I hope things are clear. But I want all of you to at least write in the comment box, are you understanding things and are you liking the class, so that it gives me that punch to produce more better questions and more better explanation. Saloni Rani, I have got a yes from your side. Others, see, I see there are 11 people. Nimisha Verma, are you able to understand the questions? Are you able to understand the logic? Okay. Next question. Fracture of porcelain is prevented by? It's a very, very important question. Using unilaterally balanced occlusion, canine guided occlusion. For feldspathic porcelain, none. So here the best answer is when we use canine guided occlusion. Okay. Thank you, Dr. RS. Thank you, Nimisha. Thank you, Saloni.
Thank you, HS. Okay, don't worry. I will take one class. Next class will be a picture oriented class, pics oriented class, where the whole class will be dedicated to the questions that come from the pics. Kindly do not miss it and tell others also to join it. It will be a real informative lecture. Whatever pics we have given, dams have given in our notes, in our printed books, we have not got even a single question out of it. Okay, so next, move on to other question. Fracture of porcelain is prevented by, see, if we will have multiple contacts in group function occlusion, porcelain doesn't like lateral forces. Centric में contact, if there is lot of centric contacts on the posterior, no problem. Why? Because the centric forces are mostly compressive forces, and porcelain is made to bear those compressive forces. It is very good in compressive forces. It is poor in lateral forces or the shear forces, which comes from when you do lateral movements. So in lateral movement, better that porcelain doesn't contact. So best would be if patient is having a group function occlusion. Group function occlusion means when the patient is on the working side. See, first of all, understand, on the working side, if beyond canine, premolars and molars contact, it's a group function occlusion. Group function occlusion is also known as unilaterally balanced occlusion. Definitely on the non-working side, it is complete disclusion. Nothing contacts on the non-working side. There is a gap. Okay? So whatever lateral disocclusion that is being provided is on the working side from canine to the molars. Okay, got it? So now you see, if you are having multiple contacts of the ceramic on this, so there are chances of ceramic fracture. Yes. So using unilaterally balanced, no. Feldspathic, they are conventional porcelain, they are not great. So this cannot be. Yes, if I give a canine guided occlusion, so definitely on the working side only canines contact and rest of the teeth are disoccluded, definitely it will not fracture. And on the non-working, this is on the working side. On the non-working side, everything is out of contact, out of disocclusion. So it is great. So it is prevented. So give a canine guided occlusion. The thing is, sometimes when the patient is a bruxer, the canine tips gets attrited and the posterior teeth gets the brunt. They get pathologic group function occlusion. So once you build up the canine guided occlusion, you see that the wear of the posterior also reduces a lot, right? So here the best answer is B, that is canine guided occlusion. Okay, next question. Elderly patients whose health contraindicates lengthy and physically tiring procedures needed to fabricate FPD should be rather treated with. So if I cannot give a definitive prosthesis because of any reason, so I'll give an interim denture or a temporary denture. So here the best answer is interim partial denture. Till the time I cannot go for definitive prosthesis, just say I do not have my car goes for a service, it's a definitive car, it's a permanent car, and if the service people, they give me a car for the time being, it will be an interim car. So till the time I cannot fabricate or go for a definitive, so I have to go for an interim denture. I will tell you other denture also. What are treatment dentures? Any denture that are used to treat any underlying condition. For example, in patients with denture stomatitis, the patient continues to wear the denture. So there what we do, we
apply on the tissue surface of the denture, we apply tissue conditioner. Okay, so the thing is that if any denture, because of the denture, if the underlying condition is getting treated with the help of tissue conditioner, so it is an example, we are treating the tissue abuse. We are treating the tissue abuse with the help of tissue conditioner and with the help of denture in place. So they will be called as treatment partial dentures, right? Then there is something known as transitional partial denture. So transitional partial denture is a denture, for example, understand, if I am having 2 to 3 teeth, okay, those are ठीक है, अभी कहाँ I am doing my work, patient is already so if patient is having 3-4 teeth and if the patient doesn't want to go for extraction, so I've given him a denture. Okay, see, the final will be a complete denture, but till the time I'll give a RPD, and if 1 or 2 teeth goes off, I can add more teeth to this. Till the time I will give a final denture. So now the problem here is I am basically transitioning my RPD patient into a complete denture patient. Why? Because this transitioning, if I am giving a RPD, transitional RPD right now, I am making my patient more adaptive to a more difficult process, that is complete dentures. So if I am having 4 or 5 teeth with a fair prognosis, so I will give a first RPD so that he gets to know the feel of it. He gets to know how to use it, how to clean it, how to do everything, so that when he gets a complete denture later, once the abutments are lost, it will be so much better for him. So that RPD acted like a transitional partial denture. Then there is something known as Ziffy denture. Ziffy denture is a type of, this is the last question, Ziffy denture is a type of interim immediate IID, interim immediate denture. For example, a patient who is just about to go to heaven, 90-95 years of age, wearing an already existing RPD, and if one of the teeth you have to extract it. Now do you expect such patient to go for extraction, wait for the soft tissue to heal, ask him to come for suture removal and get the new denture done? You don't have even the hope that the patient will live for 2 days, 3 days, 4 days. We don't know. So such patient where the patient is already wearing the RPD, for example, you extract the teeth on the same day. You just with the help of a acrylic, you add 1 more teeth to the existing denture with the help of cold cure. No problem. At least you have given us great service to the patient. So such patient, आपने दांत निकाला, you extract the teeth and on the same visit with the cold cure, just add 1 more teeth over there and let the patient go. Such patients, such denture are called as Ziffy denture. These are interim, these are type, the question this has come 5 times. Ziffy denture is a type of interim immediate denture. Got it? Got it? Nimisha, Dr. R.S. Saloni, HS. Last question for today. Resin bonded FPDs or Maryland bridge depends upon. The answer is micro mechanical retention. Mechanical retention, no. Chemical direct retention, no. So these resin bonded FPDs, or these came when the resin cements came into being. So Maryland or these are known as, these are prepared on the lingual aspect of, for example, on the lowers, a lingual aspect is prepared and we give a winged retainers. It contains winged retainers. The preparation is mainly limited to the lingual aspect or the palatal aspect, and we can just for long-term provisionalization, for intermediate restoration, we can give these restoration. So conventionally we have a PFM Pontic
and all metal retainers. All metal retainers, and on the retainers we use resin cement and bond it to the two structure. These were resin bonded FPDs. Three types were there. One was Rochet, second is Maryland, and third is Virginia. Rochet was the first Maryland. This is Pontic, and on the winged retainer there were conical perforations. लेकिन ये नहीं चला, it became obsolete. There are a lot of problems. Why? Because the cement got exposed. There were perforations. It was designed on the metal, winged metal, there was perforation. So as soon as we bonded with the or cemented or luted with the resin cement, the cement got exposed. There were frequent decementations. Then came Maryland. There was solid metal without any perforation with a Pontic, and then this tissue surface was either it was etched with the strong acid, or it was for micromechanical retention, or it was sandblasted. So this contains दिया आ जाएगा it works upon micromechanical retention. Okay, so Maryland bridge is either etched and sandblasted and etched with the acid, so micromechanical retention. Virginia bridge, right, just one, again it's a type of resin bonded bridge, where it was depending upon this something known as lost salt technique. Just write down lost salt technique to provide the, for example, this is a resinous wax pattern on the tissue surface. They sprinkle the table salt to provide those indentations or some ubra hua area. It will be reproduced in the investment, and during the burnout the salt was lost. So kabhi question, if there is a question, then the Virginia bridge is based upon lost salt technique. The salt we have sprinkled on the tissue surface to get those roughness for irregularities on the tissue surface. So that is why the name came lost salt technique. Last question, term anterior groove function. It was given by Dawson. Anterior groove function means, see, normally what happens is whenever we protrude, then only one odd teeth comes in contact in protrusion, and whenever we take the teeth towards the working side, for example this is the working side, so on the working side, okay, disclusion is normally provided by either single canines. So if the single canine is not only providing, but one more time type the type of dentures. Okay, I'll just type the type of dentures. First understand this. So if the lateral excursion, I told the canine tip comes in contact, others doesn't come in contact. So see, whole of the force is being taken up by the canines. Now if we are giving the lateral guidance, or if we are giving the, if multiple teeth they contact during lateral excursion, anterior teeth, and there is disclusion elsewhere, it is good for us. This term is known as, when the group of anteriors provide that disclusion during lateral movement, it is known as anterior groove function. Even during protrusion, if better, all of the incisors, all of the canines, if they come in contact, anterior groove function. But a type of dentures, again I am telling the type of dentures. One is a treatment partial denture, if you can see, treatment partial denture. Second is transitional denture. Third is interim partial denture, and last is Ziffy denture. Again I am repeating, interim dentures are given till the time we have a definitive processes. Now the reason may be health is not allowing, patient doesn't have money, or some other reasons, right? Transitional, we are transitioning a RPD patient to a CD patient, making more adaptive. We are not extracting whole of the teeth and giving a complete denture. No, we are giving a RPD, koi daant nikalta hai, add it, and we are transitioning the patient. Treatment denture, we are treating the underlying condition, maybe denture stomatitis, with the help of denture. Either we reline with tissue conditioner, and tissue conditioners, they will have a shock absorbing effect, and they will cure the denture stomatitis.
Ziffy denture, patient is already wearing a RPD, a very old patient, very very fragile patient, कोई दांत हिल रहा है जिसकी सपोर्ट से वो लगा हुआ था. We extract the teeth on the same visit with the help of cold cure. We add denture base and add one more teeth with the cold cure. Yes, aesthetic is not good, longevity, yes, we don't know, but then you have given an immediate treatment to the patient. Such dentures are known as Ziffy denture. They are type of these very very, so much times it has come, it is a type of interim immediate denture, Ziffy denture. I hope today's session people have understood well. I want each and everything in comment box. If you have liked it, kindly like it, and it gives me more pleasure to teach. It gives me, because teaching is my passion, and I hope the people have understood things. Thank you, take care, love you all, thank you.